Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay. How are you all? Alhamdulillah. I am also fine. Okay. So this is the time for English for class 3. So students, are you ready for learning today? Very good. Okay, but before we open our book, first we have to recite dua. Good. So raise your hand for dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. O Allah, increase my knowledge. Ameen summa ameen. So, let's begin, and I hope that you all have your workbook with you. Very good. So, open page number 23. Today we are going to do oral verb worksheet. Okay? Do you remember that what are verbs? Yes, verbs are action words. Those words which shows action are called verb. Very good. So today we are going to learn different forms of verb. ठीक है? Why do we read different form of verb? हम different form of words क्यों याद करते हैं? Let me give you explanation that why we learned it. Because हम जिस तरह से उर्दू में when we talking in Urdu, so we use words in the last of our sentence to show the time कि हम कब की बात बता रहे हैं. ठीक है? For example, if I am using like मैं पढ़ा रही हूँ, तो हूँ word is showing that I am performing the action right now. In English, मैं in English कैसे बताऊँगी इसको? उसके लिए मैं form of verb यूज़ करती हूँ. ठीक है? उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा word नहीं होता that we use in the last of the sentence. ठीक है? नेक्स्ट में अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मैं अगर एक सेंटेंस बता रही हूँ उर्दू का, तो दैट इज़ मैं पढ़ा रही थी. सो द थी वर्ड इज शोइंग दैट द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड. ठीक है? एक्शन परफॉर्म हुआ था इन द पास्ट टाइम, यानी गुजरे हुए वक्त में. तो अब इंग्लिश में ये चीज़ कैसे पता चलेगी? व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंस, दैट थिंग विल बी आइडेंटिफाइड बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. Okay, is it clear now that why do we learn these form of verbs? Very good. उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट यानी अभी की बात कर रही हूँ, सो आई विल यूज़ these form of verb means first form of verb. When I will talk about the past time means the time which has passed, जो गुजर गया, तो उसके लिए मैं ये form of verbs लगाऊंगी अपने सेंटेंस में to show that yes, that my action has performed. ठीक है? And when I talk about again the past time, then I will use these verbs. And when I talk about the action that performing or happening right now, जैसे अभी क्या action perform हो रहा है? आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ. So I am teaching and you are learning. So learning, क्या आपने बेसिक वर्ड क्या है? लर्न, लेकिन उसके अंदर हमने ing ऐड कर दिया, तो वो learning हो गया, and that form of verb become present participle continuous, and that showing that the action is performing right now. Is it clear now? Very good. So now let's move on to the different form of verbs. This is the oral worksheet number 1 from the unit Ameen and the X. Mean these form of verbs are taken from your chapter Ameen and the X. Okay, so let's begin. First one is call. Its past form is called. Its past participle means third form is called. Its present participle or continuous form is calling. Okay, did you see the difference that past form के अंदर ed add हो गया, इसमें भी ed add हो गया, and in this form always present participle और continuous form में हमेशा always we will write ing in the last of the basic spelling, so it will become the continuous form. Okay, so now let's read from the first one. Call, called, called, calling. Decide, decided, decided, deciding. Buy, bought, bought,
buying. Appear, appeared, appeared, appearing. Knock, knocked, knocked, knocking. Now, is it simple for you now? Now your task is to learn the whole worksheet. आपने क्या करना है, आपने ये वर्ड सहन में रख के और फिर आपने सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म को याद करना है. सो व्हेन यू विल बी मेकिंग योर सेंटेंसेस, तो आपको जब आपके सेंटेंस में आप कोई बात बताना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट है, वो किसी और टाइम की हो, मीन्स कि वो अभी हो रही है या पहले हो चुकी है, तो आपको फौरन क्लिक हो जाएगा दैट विच फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैव टू राइट इन माई सेंटेंस. और when you are speaking in English, so you will remember it कि आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ताकि आप बता सके कि मैं कब की बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ. Is it clear? So now your task is to learn these form of verbs. I hope that you will learn it, inshallah. So I am ending here. Take care of yourselves. Allah Hafiz.